हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। सो अल्फा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ अल्फा। द फर्स्ट वन इज अल्फा डीसी व्हिच इज इक्वल टू आईसी बाय आईई एंड द सेकंड वन इज अल्फा एसी व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईई व्हेन आवर वीसीबी इज कांस्टेंट। सिमिलरली हमारे पास बीटा भी दो टाइप्स का होता है। द फर्स्ट वन इज बीटा डीसी व्हिच इज इक्वल टू आईसी बाय आईबी and we have beta AC which is equal to delta IC by delta IB when our VC is constant. Next we have two types of gamma. So gamma DC is equal to IE by IB and gamma AC is equal to delta IE by delta IB when the VC voltage is constant. अब बात करें हम लोग इनके रिलेशन की. So we know that by the KCL law IE is equal to IC plus IB. अब हम क्या करेंगे? We are going to divide both sides by IB. So we will have IE by IB is equal to IC by IB plus IB by IB. Now we know that gamma is equal to IE by IB and beta is equal to IC by IB and यहाँ पे IB by IB cancel हो जाएगा and we will have the result as 1. So यहाँ से we will have a relation between gamma and beta that is gamma is equal to beta plus 1. Now we know that beta is equal to alpha by 1 minus alpha. तो beta की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे. So we will have the value of gamma as gamma is equal to alpha by 1 minus alpha plus 1, through which we will have the relation between gamma and alpha as gamma is equal to 1 by 1 minus alpha. So यहाँ से हमारे पास relation आ गया that is gamma is equal to beta plus 1 which is also equal to 1 by 1 minus alpha. So that was all for this video and I will see you in the next one.